So 6 minus 5i1 plus 3i2. कोई वैल्यू मुझे रिपीट करनी हो तो प्लीज डू लेट मी नो. Equals 0. नाउ आई थिंक काफी स्टूडेंट्स अप्रिशिएट करते हैं इस चीज को कि यार दो इक्वेशन से बात नहीं बनेगी, बिकॉज देयर आर थ्री अननोन्स. सो वी हैव कंस्ट्रक्टेड टू इक्वेशंस 1 and 2, बट देयर आर थ्री अननोन्स. i1 है, i2 है और i3 है. दो इक्वेशन से काम नहीं चलेगा ना. तो क्या लगता है अब मुझे क्या करना पड़ेगा? तो एक ऑप्शन तो मेरे पास ये है कि आई कैन कंसिडर अ थर्ड लूप and I can form a third equation. So if that suits you, it's perfectly all right. So that way I'll have three unknowns and I'll have three equations as well. कोई नंबर गलत लिखा हुआ है, एक सेकेंड है, लेट मी चेक. ओ 4 होगा, सॉरी गाइस, मैंने गलती से 6 लिख दिया था. दिस शुड बी 4. ठीक है, बिल्कुल सही है अनुषा. हाँ जी, सो एज आई वाज सेइंग कि एक ऑप्शन आपके पास ये है कि अब यू कैन कंसिडर अ थर्ड लूप इफ यू वांट. तो काफी स्टूडेंट्स ये करते भी हैं कि वो एक और लूप बना लेते हैं, and that's perfectly all right if that suits you. So if that suits you, you can actually go ahead and construct. अब मैं एक थर्ड लूप बना रहा हूँ. So that I can end up getting a third equation. So जरा इस वाले में भी देख लीजिएगा. So going from F to C, मैं arrows बना रहा हूँ for your convenience. I'm going against the current. So the voltage across the resistor should be written with a positive sign. So plus I3 into 1. ठीक है, ये एक चीज हो गई. अच्छा, then from C to D, there is no battery and no resistor, so I can skip that. Then from D to E, one thing at a time. So when you look at a battery, तो battery का result आपका -2 हो जाएगा. And for a resistor, since your direction is opposite to the direction of current, तो resistor के लिए positive answer आ जाएगा. And then finally, when you return back to the same point, E to F, from where you started, so there is neither a resistor nor a battery. So just equate your equation with 0. This makes up your third equation. So काफी लोगों को ये तरीका सूट करता है. And I think सही भी है. But मेरी पर्सनल सजेशन ये है कि आपको 3 इक्वेशंस बनाना एक्चुअली जरूरी नहीं है. And I think you would probably agree that we can get away with just 2 equations. The reason I'm saying that we can get away with 2 equations is because एक फॉर एग्जाम्पल इक्वेशन 1 बना ली. जी मोमल, मुझे 1 मिनट दे देना. एक फॉर एग्जाम्पल इक्वेशन 2 बना ली, और थर्ड वाली मत बनाना, मैं क्रॉस आउट कर रहा हूँ. रादर रिमेंबर, एक इक्वेशन हमारे पास पहले से है जो आपको नजर नहीं आ रही थी ना, लेकिन ये हमने पहले से कंस्ट्रक्ट करी हुई थी.
तो टेक्निकली यू डोंट नीड टू कंस्ट्रक्ट थ्री इक्वेशंस, दो से भी काम चल जाएगा, बिकॉज वन इक्वेशन फॉर करंट is already there with us right in the beginning. But nonetheless, it's your choice. So अगर आपको थोड़ा सा काम छोटा करना हो तो बस दो लूप्स बना देना, उससे दो साइमल्टेनियस इक्वेशंस बना देना, एंड द इक्वेशन ऑफ करंट कैन एक्चुअली सर्व टू बी योर थर्ड इक्वेशन. अदरवाइज जिस तरह मैंने तीनों इक्वेशंस बनाई हैं इस तरीके से कंस्ट्रक्ट कर लीजिएगा. Now यार, if somebody has a calculator on them, so I guess you can make an attempt to calculate each individual current. So आप I1, I2 और I3 को कैलकुलेट कर सकते हो. So what I'll do is कि मैं से एक स्टेटमेंट यहाँ लिख देता हूँ. दो चीजें लिखनी है. सॉल्व simultaneously to obtain current in each branch. और इसके साथ एक पॉइंट और मेंशन कर दूं. If in case you get a negative answer for current, then this will indicate that the flow of current is opposite to the direction marked on the diagram. ठीक है, तो अगर किसी पॉइंट पर फॉर एग्जांपल नेगेटिव करंट आ जाए ना, तो नो इश्यूज विद दैट. A negative answer would simply imply that the flow of current is opposite to the direction that you have marked on the diagram. So पॉजिटिव आंसर आ जाए तो अच्छी बात है, और नेगेटिव आ जाएगा तो that will just give you the indication that the actual flow of current is opposite to the direction that you have marked on the diagram. ठीक है guys, any questions so far? Otherwise मैं 5 minutes नमाज ब्रेक के लिए रुक जाता हूँ, फिर आगे कंटिन्यू करता हूँ on to the next example. कोई क्वेश्चन हो तो मुझे बता दो. मोमिल आप होकर आ जाओ, and once you're back just let me know बेटा, तो फिर मैं स्टार्ट कर दूँ. तो मैं यार 2-3 मिनट रुक जाता हूँ, फिर इसके बाद स्टार्ट कर रहा हूँ. तब तक कोई क्वेश्चन अगर है तो जरा प्लीज मुझे सजेस्ट कर दीजिएगा, अदरवाइज फिर मैं इसके एग्जाम्पल्स कराता जाऊँ. ठीक है, सो 5 मिनट्स के बाद स्टार्ट करता हूँ. सो वन शी इज बैक ना, फिर मैं स्टार्ट करता हूँ यार.
ऑल राइट, ठीक है उमेर। मोबाइल आई बैक बेटा। परफेक्ट। तो गाइज इसको अप्लाई कैसे करना है ना, उसके एग्जांपल्स देख लेते हैं। सो आप लोग वर्डिंग्स देखते जाओ, मैं साथ साथ इसको डिस्कस कर लेते हैं। और ठीक है, सो यार द डायग्राम इज गिवन टू अस। आई थिंक बिफोर आई स्टार्ट विद द क्वेश्चन वी नीड टू आइडेंटिफाई नोड्स एट सम पॉइंट। सो पहले वही कर लेते हैं ना। आई गेस इन द डायग्राम द पॉइंट लेबल्ड एज एक्स, द मस्टर्ड कलर डॉट, and the point labeled as y. X and y are the points where multiple wires are meeting. So X and Y will be classified as the nodes. Now, before I continue reading, I believe you can see I1 ka current is arriving. I2 ka current is also arriving. And the current I3 appears to be leaving. So see if that makes sense. I1 arrives, I2 also arrives, and I3 leaves. So first part, they are asking us to construct an equation. The current which arrives, I1 plus I2, and the current which leaves, I3. ठीक है, so ये आपकी first equation बन जाएगी। अच्छा, before I continue, again let me remind the fact that each current exists in its own respective branch, extending from one node to the other node. So the current I2 extends in the horizontal branch only. Current I2 extends only in the horizontal branch. Likewise, the current I1 extends in the top branch from node to node. So top वाली branch में आपको I1 का करंट जहां पर भी मार्क करना हो ना, आप मार्क कर सकते हो, नो इश्यूज विद दैट। लाइक फॉर एग्जांपल, अगर आपको सूट करे और आपको I1 मार्क करना हो, तो आप जिस तरह मैंने मार्क किया है कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है। ठीक है, अगर आपको चाहिए हो तो। एंड सिमिलरली I3 वाला जो करंट है, I3 वो एग्जिस्ट करेगा आपकी बॉटम वाली ब्रांच के अंदर, एक्सटेंडिंग फ्रॉम नोड टू नोड। सो I3 का करंट आपको बॉटम ब्रांच में जितनी दफा भी मार्क करना हो, लाइक फॉर एग्जांपल मैं मल्टीपल पोजीशंस पे मार्क कर रहा हूँ, ऑल्दो अनटाइडी हो जाएगा, सो आई डोंट थिंक यू नीड टू डू दैट, बट सिर्फ समझाने के लिए बता रहा हूँ कि आप I3 के करंट को बॉटम पे जहां पर भी मार्क करना हो कर लीजिएगा। इट्स अप टू यू। यूजुअली दी अप्रोच शुड बी कि रजिस्टर के करीब में करंट मार्क कर दिया करो, ताकि व्हेन यू आर मूविंग इन अ लूप तो प्लस माइनस की गलती ना हो। तो रजिस्टर के करीब में बस करंट मार्क कर दिया करो, एंड आई गेस दैट्स मोर देन इनफ। नाउ इन द सेकंड पार्ट, दे हैव गिवन यू अ लूप एंड दे वांट यू टू फॉर्म एन इक्वेशन। तो आप जरा लूप प्लीज चेक कर लो। एक्स बी सी वाई एंड देन बैक टू एक्स। आप जरा डायग्राम पर से देखिएगा। X to B, you don't need to write anything. B to C, I am moving with the current, so it should be minus I3 multiplied by R3. Then C to Y, again you don't need to write anything.
नो शायन, आई वाज प्लानिंग ऑन डूइंग द क्वेश्चंस आफ्टर केसीएल एंड केवीएल, तो ये आज हो जाएगा। नेक्स्ट वाली क्लास में क्वेश्चंस खुद ही कराऊंगा, तो इसलिए मैंने पोस्ट नहीं किए थे। एंड फाइनली गोइंग फ्रॉम y to x, so now you would encounter two things. If I take into account the resistor first, so my direction of current, my direction of movement rather, matches with the direction of current, so negative ho jayega. And when you come across a battery, so going from negative terminal to positive terminal, it will be a raise in the voltage, so plus E2. And when you return back to the same point from where you started, equate your equation to zero. तो यार ये equation आपकी आ जानी चाहिए based on the loop that is given to you. मैं arrows को erase out कर रहा हूँ और next part पे चले जाते हैं. So यार next में they are asking you for the loop AXY DA. Check कर लेते हैं. A to X, no resistor, no battery, skip that completely. X to B, sorry, X to Y. So for the battery, it will be minus E2. And for the resistor, I'm going against the current. So it will be positive I2 multiplied by R2. Then from Y to D, you can skip it. And finally, from D back to A. So for resistor, minus I1 R1. For the battery, plus E1. And returning back in a closed loop, so equated to zero. ठीक है, कोई पॉइंट मुझे रिपीट करना हो तो देख लीजिएगा, फिर नेक्स्ट वाला डायग्राम भी देख लें. आप जरा रीड करने का काम कर लो. मैं इसको जरा जूम इन कर देता हूँ, बिकॉज अगर कोई चीज कट भी जाएगी ना, आई डोंट थिंक इट रियली मैटर्स टू अस. Whatever matters is what you are seeing on the screen right now. So once again, पहले मैं नोड्स को आइडेंटिफाई कर दूं. P and Y. अब जरा करंट को चेक कर लीजिएगा. So I1 arrives at the node. I2 also arrives. I3 appears to be leaving. So again, as far as the equation of current is concerned, I1 arrives, I2 also arrives, I3 leaves. अच्छा, अब अगर आपको करंट को एक्सटेंड करना हो, and that's your choice, नहीं करना है तो मत कीजिएगा. But if you want to extend the current I1, you can extrapolate it backwards. So you can mark it wherever, I've just marked it a couple of times. तो सूट करे तो आप भी इस तरह मार्क कर लीजिएगा. My suggestion to you would be रजिस्टर के करीब में मार्क कर लेना. आई थिंक दैट्स मोर इम्पोर्टेंट, ताकि इक्वेशन में एरर नहीं हो. बैटरी के साथ में मार्क करना जरूरी नहीं है. मैंने एक इरेज कर दिया है. रजिस्टर के करीब में हो, दैट इज जस्ट मोर देन इनफ. सो नाउ इट्स BCXYB. सो हेल्प मी आउट. अब मैं डायरेक्ट बना रहा हूँ, जरा प्लीज आप लोग चेक कर लीजिएगा. मुझे कुछ रिपीट करना हो तो मुझे बता दीजिएगा, अदरवाइज बस ओके कर लीजिएगा. आप खुद भी जरा चेक कर लो. This is what I think
I'll end up with. आप लोग जरा चेक करके कंफर्म प्लीज कर लीजिएगा. If any term requires any explanation, please do let me know. ठीक है, तो जरा 2-3 लोग मुझे बस ओके कर दो, so I know you guys are with me before I move on to the next part. ठीक है, fair enough. नेक्स्ट वाला देख लेते हैं यार. बेटा इसके बाद वाले में दिस इज द बिगर वन. आप भी जरा अल्फाबेट को देख के फॉलो करना स्टार्ट कर दो. आई थिंक दिस इज व्हाट आई शुड गेट. चेक करते जाना. जरा देख के मुझे इस वाली इक्वेशन के लिए भी सजेशन दे दो बिफोर आई मूव ऑन टू द नेक्स्ट आइकन. कोई टर्म चेंज करना हो ना तो प्लीज डू लेट मी नो. या कोई चीज अगर समझ समझ में नहीं आ रही हो तो फिर मैं लूप पर एरोज बना दूंगा आपके लिए. फेयर इनफ. अगला देख लो. आई जस्ट होल्ड ऑन फॉर अ कपल ऑफ मिनट्स ताकि आप पहले पूरा रीड कर लो. एंड आई जस्ट लेबल द रेलेवेंट टर्म्स फॉर यू जो मेरे काम के हैं. आप पूरा रीड कर लो. I'm only highlighting the terms which are not given to you on the diagram. रीड कर लीजिएगा प्लीज. ठीक है. So I'm assuming you are done with the statement. Yeah, the one thing which is not mentioned on the diagram is the fact that the portion which I'm highlighting on the diagram, BF, this is a uniform metal wire whose total resistance is R2. Just keep that in mind. This wire has a total resistance of R2. And J is the midpoint. ठीक है. सो जरा जहन में रख लेना कि the metal wire has a resistance of capital R2. I'll mention that in a moment. And J is a midpoint. My first question is, nodes यहाँ पे मुझे alphabet wise बता दो कौन से. So which point over here, which points rather constitutes the two nodes? पहले आप सजेशन दे दो फिर डिस्कस कर लेते हैं. So जरा डायग्राम को देखिए. B and J, मिनाब ने आई थिंक सही लिखा है. B is one point where multiple wires are meeting. J is another point. Fair enough. ठीक है. B and J बिल्कुल सही है. So मैंने आइडेंटिफाई कर दिया. Now for your convenience, what I'll do is, you don't have to do it. Mandatory तो नहीं है. But for your convenience, I guess it would be sensible कि मैंने ये वाले वायर को थोड़ा सा ब्लैंको कर दिया है. इसके साथ वाले वायर को भी थोड़ा सा ब्लैंको कर दिया है. जस्ट सो दैट मैं ये कर लूं
कि इधर एक रेजिस्टर बना देता हूँ छोटा सा रेड कलर का, just so that you remember that this is actually a wire offering a resistance. And if you allow me, I can label the resistance as R2 upon 2 because J was the midpoint. तो लिखना जरूरी नहीं है, लेकिन अगर आप लिख लोगे ना हाफ R2 तो आपके लिए जरा सा याद रखना आसान हो जाएगा. So this was the resistance wire. The total resistance was R2 ना, and J was the midpoint. तो मैं half and half split कर रहा हूँ. Fair enough. Now if I ask you, which current is limited where? Which current is limited where? Let's start with I3 first. So let me highlight that for you. I3 is limited in the portion which I am highlighting right now. ठीक है, तो आपको जिधर भी बनाना हो इस बॉटम वाली ब्रांच के अंदर आप I3 को लेबल कर सकते हो as many times as you like. As I said, just mark it close to a resistor and that would be more than enough. ठीक है, बस मैंने रेजिस्टर के करीब में मार्क कर दिया है. ना करना हो तो मत कीजिएगा. अच्छा, limitation of I2. So again, every current exists in its respective branch from one node to the next node. So I believe I2 का यही बस इतना ही पोर्शन बनेगा जिसमें I2 एग्जिस्ट करेगा. So I don't think कि मैं ज्यादा एरोज बना सकता हूँ, जरूरत भी नहीं है. Now what about I1? So again, every current extends in its respective branch from a node to a node. So I1 के लिए it's this entire thing which I am highlighting right now from a node to a node. So please have a look. I1 can be marked as many times as you like in this entire yellow highlighted portion. So if you ask me, I would prefer to at least mark I1 on a few of the occasions. Let's see where. Just close to a resistor would do. बहुत सारे मार्क मत करना, थोड़ा सा अनटाइडी हो जाता है, बट एक रीजनेबल फॉर्म में मार्क कर देना जैसे मैंने कर दिया. तो अब जरा वर्किंग पे जाते हैं एंड आई थिंक अब मैं इसको वर्टिकल कर देता हूँ. थोड़ा सा डायग्राम छोटा हो जाएगा लेकिन आई गेस मैनेजेबल तो है. सो स्टार्टिंग विद करंट. सो आप जरा डायग्राम पर से देख लो. I1 arrives. I3 also arrives. And I2 leaves. थोड़ा अनटाइडी है लेकिन आई गेस मैनेज हो जाएगा. I1 arrives. I3 also arrives. I2 leaves. Fair enough. अच्छा, अब जो लूप गिवन है ना उसको आप जरा देख भी लो. मैं इक्वेशन बनाता हूँ, आप थोड़ा सा केयरफुली देख लीजिएगा, देख लें कि आपको सूट करता है कि नहीं.
मैं बना लूं तो फिर आप ओके कर लीजिएगा इफ इट्स फाइन फॉर यू। सिंप्लीफाई करें ना करें आपकी अपनी चॉइस है, हाँ? कोई भी एक्स्ट्रा टर्म आपको लगे ना तो मुझे प्लीज सजेस्ट कर दीजिएगा। चेक कर लीजिएगा, इफ इट सीम्स ओके देन आई मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन। सिंप्लीफाई आपकी चॉइस है, हाँ? करना हो तो कर लीजिएगा, वरना जस्ट लीव इट इन दिस फॉर्म। ठीक है, सो फार सो गुड आई गेस। कोई टर्म रिपीट करना हो तो प्लीज देख लो। और आई प्रोसीड ऑन टू द नेक्स्ट वाला लूप। सो दिस इज द बिगर वन, HBCDJFGH। सो यू गाइस गो अहेड, आप खुद भी देखते जाओ। Any term that you think you are not able to understand, please do let me know. Please properly देख लो। Alphabets, symbols and everything. जरा प्लीज इसको भी देख के ओके कर लीजिएगा, if you are aware of all the terms. ठीक है, तो यार नेक्स्ट वाला डायग्राम भी देख लेते हैं। सो आप जरा स्टेटमेंट्स को बस थोड़ा सा रीड करते जाइएगा जब तक मैं डायग्राम पे चीजें ड्रॉ कर रहा हूँ। अगेन नोट्स को पहले आइडेंटिफाई कर लेते हैं बिफोर वी प्रोसीड ना। सो इन दिस केस W and Y should be the nodes। ठीक है, currents I2 arrives, I3 leaves, and I1 is also arriving। So this should be your equation। ठीक है, नेक्स्ट चीज
एक सेकेंड है गाइस, मैं इरेज कर दूं। ठीक है, नेक्स्ट चीज, अगर आपको करंट की लिमिटेशंस चेक करनी है, सो द करंट ऑफ I2 only exists in the diagonal branch, so I don't need any more arrows for that at least. The current of I1 exists everywhere in the yellow highlighted branch. Since there are no resistors other than R1, so I don't need to mark any extra current arrows. And I3 exists top वाली branch में. So इसके अंदर, in case if you want to mark a couple of arrows, so I think I'll just mark one more arrow right besides the resistor, if that is of any relevance. Judge कर लो तो मत mark करना. So the loop that is given to you, W, X, Y, Z, W. So this will be the equation. आप जरा check करते जाना. Going from W to X, going from W to X for current and my direction being the same, so मैं negative में लिखूंगा. For battery, it will be positive. Then going forward from X to Y, again my direction matches with the direction of current, so negative. And बिल्कुल लास्ट वाला भी जरा देख लीजिएगा. तो बैटरी के लिए इट विल बी आई गेस पॉजिटिव E2, और रजिस्टर के लिए इट विल बी माइनस I2 R2 equated to 0. And for the next one, YZ WY. So I think ये तो डायरेक्ट बन जाएगा ना. तो गोइंग फ्रॉम Y to Z, चेक कर लो. माइनस I1 R1 प्लस E1. कोई नंबर रिपीट करना हो तो प्लीज देख लो. आई गेस ये रिजल्ट आएगा. मैंने आपने लिखा हुआ है B part. Let me check. Shouldn't it be YZW? But when B part में मैं check कर लूं. Are you commenting on the answer, Meena, or the way the loop has been labeled? Oh, यार वो तो examiner की choice है. So WXYZW is fine as long as it's a closed loop, and I guess it is. Let's see. From W we are going to X. Sorry. From W we are going to X. Fair enough. From X we are going to Y. बिल्कुल सही है. From Y we are going to Z.
एंड फ्रॉम जेड वी आर रिटर्निंग बैक टू डब्ल्यू। तो मैं ना, एग्जामिनर ने तो सही लेबल किया है, बिकॉज इट्स अ क्लोज लूप। मैंने गलती करी है आंसर के अंदर, शायद मैं चेक कर लूं। यस, मैंने गलती करी है, बिल्कुल सही है। आई वॉज नॉट लुकिंग एट दैट लूप, सॉरी। So I think we were okay till E3. We were also okay till minus I3, I4. It was my mistake. I went diagonally, which shouldn't have been done. Change करता जा रहा हूँ. Minus I3, I4 के बाद, then I need to go all the way down from Y to Z. So हाँ Minab, you're right. I1, R1 आ जाएगा. ठीक है guys, sorry मैंने गलती से diagonal वाला loop ले लिया था. Although it was the square shape loop. And plus E1, I guess. And this should be equal to 0. अब ठीक है मेरा ख्याल है। सही है, तो वो बाय मिस्टेक मैं डायगनली चला गया था, हालांकि द लेबलिंग ऑफ द लूप वाज मेकिंग अस गो इन अ स्क्वायर पैटर्न। ठीक है यार, तो मेरा ख्याल है मैं आज यहाँ पर कंप्लीट करता हूँ इस वर्किंग को, और फिर अगली वाली क्लास में जो है ना, थोड़े से क्वेश्चंस वगैरह काफी जमा हो गए हैं, तो फिर वो वाले करा दूंगा। एंड वन लास्ट थिंग दैट इज लेफ्ट इज पोटेंशियोमीटर। सो पोटेंशियोमीटर करा दूंगा, अदरवाइज क्वेश्चंस करा दूंगा कोई एक चीज। सो विल बी डन विद इलेक्ट्रिसिटीज थ्योरी एटलीस्ट इन द नेक्स्ट क्लास, फिर इसके बाद क्वेश्चंस करने हैं। ठीक है गाइस, लास्ट क्लास का मैंने लेक्चर गलती से अपलोड नहीं किया था, सॉरी फॉर दैट, वो मैं अभी कर देता हूँ। सो आई विल अपलोड द लास्ट क्लास लेक्चर फर्स्ट, एंड देन आई विल अपलोड द किरचॉफ वाली वर्किंग। अनुषे, थोड़ा सा इलेक्ट्रिसिटी के क्वेश्चंस पहले कराऊंगा, बिकॉज न्यूक्लियर फिजिक्स बहुत ही आसान है। आई वुड रादर वांट कि उसको थोड़ा देर से भी करा दूं तो कोई मसला नहीं है। इलेक्ट्रिसिटी के थोड़े से क्वेश्चंस करा दूं, बिकॉज वो मैंने काफी अरसे से नहीं कराया ना, मैं कंटिन्यूसली थ्योरी ही कराया जा रहा था। सो वो मैं चाह रहा हूँ पहले करा दूं, क्योंकि न्यूक्लियर फिजिक्स विल हार्डली टेक एनी टाइम, वो बहुत ही सिंपल टॉपिक है। ठीक है गाइस, मैं कंक्लूड कर रहा हूँ, लेक्चर अभी अपलोड कर दूंगा। ऑल राइट, खुदा हाफिज यार। तुम लोग रूहुल्ला और बासिल एंड एक्सेट्रा लेक्चर अपलोड कर देना यार, व्हेनेवर यू गाइस हैव द टाइम। ठीक है, खुदा हाफिज मेरा बेटा। अल्लाह हाफिज एवरीवन।